Hello everyone, a very good morning to all of you. So Paryavaran Sanrakshan is live here in the Eco Sunday, Eco Talk. So I just hope you all will join soon. I'm waiting for everyone to join. Whoever has joined the session, do let me know in the comment section. I would be more than happy to interact with you. Yes, so I can see that viewers are joining. Great. I'll be waiting for more viewers to join, as this is going to be a very important, very meaningful and interesting session for all of you. All right, so the participants are increasing. I'm waiting for everyone. Let's join the session quickly. All right, I can see people are joining. I'm so happy to see that you all are sparing some time from your precious schedule and you're actually joining the session to have this Eco Talk on Eco Sunday. Great. So waiting for the viewers to join. Till then, let me tell you what this session is going to be all about. So hello everyone and a very good morning to all of you. Sabhi ko namaste. Welcome to the official Facebook page of Paryavaran Sanrakshan Gatividhi PSG, and thanks for taking the time to be a part of this Eco Sunday in this Eco Talk with me. I hope you all will have a great time with me. For that, I would like more and more viewers to join so that we can have an interactive session with each other. So चलिए start करते हैं. People will join in and everyone will join this Eco Talk. Those who have already joined, you can let me know in the comment section so that I can interact with you. All right. So before we begin, I would like to first thank PSG, Paryavaran Sanrakshan Gatividhi, for giving me this opportunity to come live here and present myself. Thank you so much PSG for this golden opportunity, and I am more than humbled to receive this. Also, I promise to make this session interesting and meaningful at the same time. हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमें इस सेशन में मज़ा भी आए और साथ ही साथ हम कुछ मीनिंगफुल बातें भी करें फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एनवायरनमेंट. तो मैं आपको बता देती हूँ दैट व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन और मैं आज यहाँ पर लाइव क्यों हूँ. So the objective of the session today is that I'll be sharing my amazing journey at the very first National Environment Youth Parliament that was held in our country on 16th April 2022. And not only this, I am not only going to share the experience of the National Environment Youth Parliament, but I will also share how this parliament changed my attitude toward life and of course toward environment. Also, please feel free to drop questions or queries regarding my journey or anything else in the comment section. I will definitely try to pick them up. Alright, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं हाउ आर यू फीलिंग, हाउ इज़ योर डे गोइंग, कैसा जा रहा है आपका संडे और क्या आप एक्साइटेड हैं इस इको संडे के लिए जो कि आज आप मेरे साथ स्पेंड करने वाले हैं. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रिस्पॉन्सेज इन द चैट बॉक्स. प्लीज़ फील फ्री टू रिस्पॉन्ड. आगे बात करते हैं. बिफोर वी गेट स्टार्टेड, सबसे पहले मेरे लिए ये ज़रूरी हो गया है टू टेल यू दैट हु आई एम एंड व्हाट आई डू. मैं कौन हूँ, मैं क्या करती हूँ और आज मैं यहाँ कैसे आई हूँ आप सबके बीच. So, I am Yashika Chugh. I am a Delhi-based educator and academic content creator. I've been working with various educational institutions to understand how knowledge, strong subject knowledge and passion for teaching actually shapes the education system of our country. And now
I am also a passionate environment ambassador. सही सुना आपने. Not only an educator, not only a content creator, but I am also a passionate environment ambassador now. आप सोच रहे होंगे ये टर्म का मतलब क्या है. What is environment ambassador? Campus ambassador, brand ambassador, ये वर्ड्स तो आपने सुने होंगे, but environment ambassador rarely सुना होगा. तो let me tell you. Who is a campus ambassador? As a campus ambassador or environment ambassador, हम कोई भी ambassador जब बनते हैं तो हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू स्प्रेड अवेयरनेस. तो environment ambassador के तौर पे my duty, my objective is to spread awareness and educate maximum people about environmental issues and also to achieve the goal of sustainable development of environment. तो आप इस बात को यहाँ समझें कि ये एडुकेटर कम कंटेंट डेवलपर जो आज आपके सामने हैं, शी हैज़ ऑल्सो बिकम एन एनवायरमेंट एम्बेसडर हु इज़ ट्राइंग टू एडुकेट मासेस टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंट. सो आई होप ये बात आपको भी इंस्पायरिंग लगे, सो दैट इवन यू डू योर पार्ट टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड द एनवायरमेंट. अब हम आगे बात करते हैं. दिस वॉज ऑल अबाउट मी. मैं कौन हूँ, मैं क्या करती हूँ, माई बैकग्राउंड. बट आगे हम किस बारे में बात करने वाले हैं? द जर्नी ऑफ बिकमिंग दिस एनवायरमेंट एम्बेसडर, कि मैं यहाँ तक कैसे आई और ये जर्नी कैसे फुलफिल हुई. तो इसको मैं आपको एक कहानी की तरह सुनाने वाली हूँ. एंड डू नॉट वरी, दिस स्टोरी इज़ नॉट गोइंग टू बी बोरिंग एट ऑल. आई एम प्रिटी श्योर इट इज़ गोइंग टू बी वेरी मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग एट द सेम टाइम फॉर यू. चलिए आगे बढ़ते हैं. इट ऑल स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ जनवरी 2022. January 2022 on Swami Vivekanand Jayanti. हुआ ये कि I came across a brochure that talked about the National Environment Youth Parliament. अब जब मैंने National Environment Youth Parliament के बारे में पढ़ा, two words attracted me the most: National and Parliament. I am being completely honest here. Two words attracted me the most: National and Parliament. The concept of environment was secondary for me at that point of time. तब मेरे लिए environment का concept थोड़ा सा secondary था. And I saw this event, this parliament event, as an opportunity to interact with the dignitaries from all over India and of course to raise my voice. तो मैंने इसे competition की तरह लिया. This journey started with a district level competition, a district level competition in which different universities of Delhi participated and I was one of them. It was an extempore competition on sustainable environment. I luckily managed to grab the first position in the district level competition. And यहाँ journey ख़त्म नहीं हुई. इसके बाद we had the regional level competition in which I got the opportunity to present my views among different speakers from Delhi and Haryana regions, and once again I managed to be the regional winner. This definitely increased my confidence and of course motivated me to do better. But now, after this, there was a time, it was a time for the final verdict. और वो final verdict क्या थी? That was the national level parliament. After various screening rounds, vigorous trainings and vigorous selection process, I finally managed to make it to the National Environment Youth Parliament as an opposition member. I presented my views on education for sustainable development of environment. And that was the day when I presented my views live at the Sansad Bhavan, Parliament House, New Delhi on 16th April 2022. Not only this, I also received the golden opportunity to interact with our Honorable Lok Sabha Speaker, Shri Om Birla ji. And let me tell you, that was my once in a lifetime experience and I was more than happy, more than humbled. तो ये था मेरा experience at the National Environment Youth Parliament. मैं कैसे वहाँ पहुँची, मेरा क्या गोल था, क्या विजन था टुवर्ड एनवायरनमेंट और क्या एक्सपीरियंस था. तो ये सब तो था कि मैं वहाँ तक कैसे पहुँची, राइट. कहीं पर भी पहुँचने के लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ती है, एफर्ट्स तो करने पड़ते हैं. बट नाउ लेट मी टेल यू द रियल स्टोरी बिहाइंड दिस.
As I mentioned, I was initially taking this event as a means to present myself on the national platform, कि मुझे बोलने का मौका मिलेगा, मुझे डिग्निटरीज से मिलने का मौका मिलेगा. But you won't believe one thing. मैं आपको ये बताना चाहती हूँ that in this journey from January to April, I met different people, a lot of people across the country from different cultural, educational and professional backgrounds. You won't believe, एक तरफ मैं मिली एक बैचलर्स करते हुए स्टूडेंट से, दूसरी तरफ अ PhD स्कॉलर, तो तीसरी तरफ प्रोफेशनल पर्सन. इतने सारे लोग फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, different cultural backgrounds, educational backgrounds, and but you know what was common? The common thing among them was कि वो सब environment के लिए work कर रहे थे. They all were working toward the betterment of environment, and this is something that inspired me. So ये जो competition मेरे लिए beginning में सिर्फ एक extempore और speech competition था, it turned out to be a life changing experience for me, because I realized that it brought a huge difference in my attitude toward the environment. Then it was the time when I decided to do my part for sustainable development of environment even after the event was over. तो ऐसा नहीं था कि initially, क्योंकि मेरे लिए ये सिर्फ एक extempore competition था, पर अब ये मेरे लिए एक extempore competition बन के नहीं रहा. Now I am working toward the betterment of environment and for a social cause. So this was my journey, and I hope इस journey से आपको भी motivation मिलती है, inspiration मिलती है to work towards achieving your dreams. Even I never imagined that I would be able to speak in front of the honorable Lok Sabha speaker, but it happened. Now, yeah, I'm so sorry. I think there was a disconnectivity, internet issue. I am back here again. I am live again. तो आगे continue करते हैं. As I mentioned that I am from education industry. मैं education industry में work करती हूँ. My goal has always been to shape the education system of my country and to spark an educational revolution. आपको ये बात समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अंदर आया है फ्रॉम बीइंग एन एजुकेटर टू बीइंग एन एनवायरमेंट एम्बेसडर, दिस इज समथिंग इवन आई नेवर एक्सपेक्टेड. एट फर्स्ट आई वॉज अनश्योर ऑफ हाउ आई माइट कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड द एनवायरमेंट. मैं क्या कर सकती हूँ? आई कैन प्लांट ट्रीज, आई कैन यूटिलाइज इको फ्रेंडली आइटम्स, आई कैन सेव वाटर एंड एनर्जी एट माई होम. बस इतना. मोर देन दिस क्या कर सकती हूँ मैं? But I wanted this to be a revolution. मैं चाहती थी कि मैं सिर्फ इस चीज़ को यहाँ तक ना रखूँ कि I am following these practices at my home, but I wanted to get this knowledge out there so that people rethink their minds about environment. उनको सोचने पे मजबूर करना चाहती हूँ मैं कि your attitude toward the environment is not correct. I generally manage my profession and my education together. सब कुछ साथ में चल रहा है. तो I was also a little concerned कि मैं अपने प्रोफेशन के साथ ये environment के लिए कैसे वर्क करूँगी. But then I got connected with PSG, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि, and then I realized that it's your will that you need to have. बाकी सब कुछ अपने आप हो जाता है. And I recalled a quote. मेरे माइंड में उस समय एक कोट आया पर्यावरण संरक्षण के साथ जुड़ने के बाद. When things change in life, do not change your goal, change your strategies. जब आपकी लाइफ में सिचुएशंस चेंज होती हैं, आप अपने गोल को चेंज नहीं करते हैं. If my goal is to spark an educational revolution in my country, that is not going to change. पर मेरी strategies ज़रूर चेंज हो सकती हैं. So this is what I exactly did. My goal is still the same. I aspire to influence the education system of my country, but for sustainable development of environment. So this is the difference in my perspective now. My goal is still the same. मैं आज भी यही चाहती हूँ to bring about an educational revolution, to influence and shape the education system of my country. पर बस difference इतना है that I have included environment in it, and I am working for education for sustainable of development environment. So this is what my journey is. तो आपको बस इतना मैं बताना चाहती हूँ through my journey
that when things get tough, when your perspectives change in life, do not change your goals, change your strategies, and you'll be there. My journey managed to transform my perspective on life, and most importantly, my perspective toward the environment. And in the following section of our conversation, I'll be talking about this perspective. मैं आपसे बात करूंगी कि कैसे ये पर्सपेक्टिव हमारी सोसाइटी में भी एक बहुत मैसिव चेंज लेके आ सकता है टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एनवायरनमेंट. तब तक के लिए, if you have any questions, if you have any queries, so please drop your comments in the comment section. I would be more than happy to interact with you and answer your queries. I hope you are feeling motivated and inspired after listening to my journey, and I really hope that you work towards the betterment of environment. I would love to have some queries, some questions. हम इसको interactive session भी बना सकते हैं. I would never prefer to have a one-sided communication. I can see so many people have joined. Durgesh Sharma, Parikshit Rajendra Parmar ji, Anil Panghal ji, Aishwarya Mahajan ji, Rajeshwar Singh Arora ji. Thank you so much for joining this session. So मुझे यहाँ पर अभी एक क्वेश्चन आया है जल संरक्षण के उपाय. तो चलिए हम जल संरक्षण के उपाय के बारे में बात करते हैं. मैं इस चीज़ के बारे में आपको ये बताना चाहूँगी कि हियर एट पर्यावरण संरक्षण गतिविधि वी फॉलो द 5 मेजर प्रिंसिपल्स. ये 5 मेजर प्रिंसिपल्स क्या हैं? जैसे आपको ये 5 हमारे हाथ की फिंगर्स दिख रही हैं, राइट? ऑल दीज 5 फिंगर्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. सो सिमिलरली वी हैव 5 important elements of environment, that is water, air, biodiversity, forests and energy. मैं दोबारा रिपीट करूँगी. I will reiterate: water, air, biodiversity, forests and energy. These are the 5 essential elements of our environment, and here at Paryavaran Sanrakshan Gatividhi we are trying to work towards securing all these essential elements of environment through our various programs and through our various training processes. तो जल संरक्षण एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं. You can save your RO water. You can have a concept of cutting water. आपने कटिंग चाय के बारे में सुना होगा. Let me introduce the concept of cutting water. Whenever you serve water to anybody in a glass, do not fill it completely. I may understand that this might against go your moral principles. आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, किसी को आधा ग्लास पानी देना तो अच्छा नहीं होता, पर वो आधा ग्लास पानी वेस्ट करना भी अच्छा नहीं होता, राइट? सो वॉट यू कैन डू इज़ fill half of the glass with water, उन्हें सर्व कीजिए, and if anybody would like to have more water, they will ask for it, right? तो आप इसको ये मत समझिए कि इसमें हम कुछ गलत कर रहे हैं, दिस इज अगेंस्ट आवर मॉरल एथिकल प्रिंसिपल्स. नो, नथिंग. You are doing your part to conserve water, and that is what is the need of the hour. This was just one thing. Rain water harvesting आजकल मैं देख रही हूँ, it is becoming common in every nook and corner of the society. तो वो हम क्यों नहीं कर सकते, right? And especially in the states जहाँ पर काफ़ी heavy rainfall होती है. Saving your RO water, cutting water, moving forward, rain water harvesting, और सबसे अच्छी बात, you can install water aerators at your home. पर्यावरण संरक्षण गतिविधि में आने से पहले even I never had any idea about water aerators, but now I have started using them, and I have also shared this with everyone around me in my neighborhood and in my family, right? That we can use water aerator, जो कि एक बहुत छोटा सा बेसिक सा टूल है. You can install it on the taps. उससे क्या होता है, आपका वाटर जो है स्ट्रीम्स में बाहर आता है. एयर और वाटर की मिक्सचर कॉम्पोजिशन के बाद आपका जो वाटर है स्प्रिंकल होता है उसके अंदर से, एंड इट गेट्स सेव्ड. वाटर एरिएटर्स, कटिंग वाटर, सेविंग आरओ वाटर, ये सारे कॉन्सेप्ट्स की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यू विल बी एबल टू फाइंड ऑन द वेबसाइट ऑफ पर्यावरण संरक्षण गतिविधि. ऑल्सो यू कैन डाउनलोड द इको मित्रम ऐप टू लर्न सम अमेजिंग इको हैबिट्स. एंड दीज इको हैबिट्स आर वेरी ईजी टू बी फॉलोड एट योर होम. आप इजीली फॉलो कर सकते हैं. आपको कुछ खरीदना नहीं है, कहीं पैसे नहीं लगाने, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना. सो दिस इज़ वॉट वी कैन डू. पानी का ग्लास उतना भरे जितना रिक्वायरमेंट है, एंड नॉट मोर देन दैट. सो ये ईजी सिंपल स्टेप्स व्हेन यू स्टार्ट फॉलोइंग देम फ्रॉम एट योर होम, तो होता क्या है कि आपको लगता है ये छोटा सा स्टेप है,
बट सोसाइटी में इट टर्न्स आउट टू बी अ रेवोल्यूशन. सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन कि जल संरक्षण के उपाय क्या हो सकते हैं, एंड यू विल ऑल्सो बी एबल टू फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन इको मित्रम ऐप एंड द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ पर्यावरण संरक्षण गतिविधि. चलिए आगे बात करते हैं. I told you that my perspective towards life changed, right? कि environment parliament में आने के बाद my perspective was changed. कैसे? You know what? Attitude is a powerful force. I reiterate, attitude is a powerful force. आपका ये जो attitude है, it can take you places. You can see that environment is facing a lot of issues in terms of ecological imbalance, biodiversity loss, right? पर हो क्या रहा है? Our country is economically growing. Our country is also technologically advancing. टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, डेवलपमेंट हो रही है, बट कहीं ना कहीं ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट. तो हमें डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच का एक हारमोनियस डेवलपमेंट बना के रखना है. और ये हारमोनियस डेवलपमेंट कैसे होगा? हरित घर. So this is the concept of हरित घर that was introduced by पर्यावरण संरक्षण गतिविधि. अब हम ऐसा सोच रहे हैं कि हर घर को हमें हरित घर बनाना है. हरित घर में आप ये सारे 5 प्रिंसिपल्स फॉलो कर सकते हैं. सेविंग वाटर, सेविंग एनर्जी, राइट, प्लांटिंग ट्रीज, ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स. ये सारी चीज़ें जब आप ये 5 महाभूत को फॉलो करेंगे, यू विल बी एबल टू मेक योर हाउस ग्रीन हाउस, हरित घर. तो आप आगे इस चर्चा को आगे ले जाते हुए आई वुड ऑल्सो लाइक टू से दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज क्रिएटिंग अ हेल्दी बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट. हमारी कंट्री की डेवलपमेंट रुक नहीं सकती. वी आर एन एमर्जिंग इकोनॉमी, राइट. तो डेवलपमेंट नहीं रुकेगी बिकॉज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग. But what we need to do is we need to maintain a balance between development, population, resources and environment. And here at Paryavaran Sanrakshan Gatividhi, we have this revolution and we would love all of you to join this revolution. Do visit our website, know more about Harit Ghar, know more about Panch Mahabhut, 5 essential elements of the environment by downloading the Eco Mitram app today. Now, it's almost time for me to conclude my session. Session को conclude करने का time आ गया है. But before that, I would like to say one thing. I would just like to request, let's not use land as a commodity. Land is not a commodity that belongs to us. No, never. Let's see it as a community to which we belong. जब तक आप लैंड को एक कमोडिटी की तरह देखेंगे, you will never be able to respect and love it. See it as a community to which you belong, and I'm pretty sure you will learn to use it with respect and love. You all have been a fantastic audience. I really appreciate all of you coming to this session today. Do not forget to make हर घर हरित घर. हरित घर के बारे में और जानकारी, crucial points and information you'll be able to find on our website and Eco Mitram app. Before I conclude this session for today, हमारी Eco Talk और इस Eco Sunday में आपको कैसा लगा? How did you feel? Did you find this session meaningful and enjoyable with me? Do let me know in the comment section. And if you have any questions regarding my journey, regarding PSG, regarding the activities that we conduct all over India, do let me know in the comment section. I would more than happy to solve them. So I can read some of the comments from people. They are saying that it was a wonderful session. It's been my pleasure to be here. It was my honor to represent PSG and have this Eco Talk with you here. All right, so I can see a lot of comments pouring in. This is a great experience for me. Once again, I would like to thank Paryavaran Sanrakshan Gatividhi for having me live here. I would definitely look forward to more such opportunities, and I would love to interact with you all again in future. So thank you so much for joining the session. Do not forget, land, nature, earth is not a commodity. It's a community that we all belong to. Respect it, take care of it,
things will change in life. Life is dynamic. Do not change your goals. Do not get distracted from your goals. Change your strategy. Make Har Ghar Harit Ghar. See you all once again very soon. Have a great Sunday, and I am hoping to see you all very soon. Thank you. Bye bye. Have a great day.